I want to go across now to Manoj Muntashir. You've seen him on India Today before. He's a songwriter, a music director, and a lyricist, and someone who has worked with Sushant Singh Rajput. He is someone who also spoke out on the day that he was found dead. Manoj, good evening. Thank you very much for being with India Today. I wanted your, your opinion and your reactions, Manoj, to this, what I personally feel is a highly inappropriate and insensitive editorial written by Sanjay Raut in the Shiv Sena mouthpiece Samna, saying that Sushant Singh Rajput took his own life because of fear of failure and disappointment. Okay, so if Mr. Raut is to be believed, then the police probe is over. So we have got all the answers. There is no need of any further investigation. So, okay, the case is closed. Because before the case is closed, this kind of remark only could be termed as insensitive and jumping the gun and passing a judgment which is totally uncalled for. And also, this is disrespecting the memories of a great actor. Yeah. Who knows what was running there? Who knows what was actually happening? So instead of just probing deeply into it, instead of finding the root cause so that such cases do not get repeated, I'm not trying to romanticize his death because there is nothing heroic about suicide. Let's get that straight. I'm not trying to tell you that, okay, what he did was perfect. The pain of losing Sushant Singh Rajput has still not subsided in my heart, but at the same time, the anger is still there. I'm angry with him. Yeah. I'm angry with him for taking his own life. But my anger and Mr. Raut's anger, or whatever he is trying to speak through his mouthpiece, Samna, these are two different things. I cannot be insensitive. I have to understand that yes, there were problems. Nobody picks a rope, hangs himself onto a fan just to, because uska us din dimag theek nahi tha. He woke up in the morning, he asked for juice, रात तक वो दोस्तों से बात कर रहा था, उस कुछ घंटे में कुछ तो हुआ है. There has been something. Yeah. अगर वो इतना ही normal था, अगर वो इतना ही बातें ऐसी थी, जैसे कि Mr. Raut ने बोला कि he was frustrated because he was behaving weirdly on the sets. All of us behave weirdly. If I am asked to make a character sketch of the biggest noble people in this country and biggest the people who stand out for their demeanor, for being a nice guy, सबका प्रॉब्लम है लाइफ में. देयर आर मोमेंट्स जहां हर कोई वियर्ड बिहेव करता है. कल कुछ बड़ी घटना हो जाए, आप उस एक मोमेंट को उठा के जजमेंटल हो जाते हैं कि ये तो ऐसा ही था. व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दैट? आई एम सॉरी बट दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल बाय समवन who is a part of the industry. I am industry. Mr. Raut is not industry. I know more about this industry than him. At least in that one corner, I am more. I'm into it. And he's not into it. He's an outsider. Yeah. He is just seeing it from outside. He has no clue that what was actually going on. Manoj, do you think Sanjay Raut is protecting someone? The reason I'm asking is very specific. Because in this editorial, he says it is not true that Bollywood is controlled by a few people. You know, I get the sense that he is trying to make a case for somebody else. We've all seen how pressure has built on certain power centers within Bollywood. We've seen the spotlight on nepotism, etc. Why is Sanjay Raut now taking the pains to say, Manoj, that Bollywood is not controlled by a few people? Shiv, anybody who has worked in close association and proximity with Bollywood or any industry will definitely come up with one conclusion, that Bollywood is no different compared to any other corporate, any other industry. Yeah. तो ये जो पावर सेंटर्स है, आप मुझे बताएं, मुझे दुनिया की एक इंडस्ट्री बताएं जहां पावर सेंटर्स नहीं है. Why denying something which is so obvious? Yeah. Why denying it? Let's not make a fool of ourselves by denying something which is obvious, which is there in the face, which you cannot deny. Yes, there are power centers. I am not sure about the nepotism though, because there is dynastism, there is groupism. Yeah. Nepotism, I'm not too sure. So there are power centers, there are people who run this industry, which is not a bad thing, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कोई एक जगह पे होता है जो कि शॉट्स कॉल करता है. That is understandable. But if it has gone to those extents कि उसने किसी कलाकार की जान ले ली इतने बड़े एक्टर की, then there are questions to be raised, there are voices to be heard. So you cannot just shut everything off by writing a piece that he was not mentally stable and that's why he had to die today or tomorrow. आज नहीं तो कल मरना ही था. No man, it is not what I would like to hear at this point of time. I need more sensitivity, I need more probe into it, I need more investigation, and I need more heart and more emotion to this story.
What does this editorial do on the issue of mental health? The death of Sushant Singh Rajput, Manoj, has brought a focus, a much needed focus on suicide, on mental health, on how people feel, on isolation. Do you think this so-called editorial by Sanjay Raut in many ways has actually damaged that, because he's just dismissed it as something else? Now there were other important issues to be raised. Let me try and get a hang of it. So the other important issues, that the power centers, when power centers are generated, how do power centers come into being? Because there are multiple industries in this country, film industries. The film industries are always dependent on the language and the territory in which the language is spoken. तमिल फिल्में कहाँ बनती हैं? तमिल फिल्में बनती हैं चेन्नई में. क्यों बनती हैं? There is a reason, because तमिल लैंड है, वो वहीं बनेगी तमिल फिल्म. तेलुगु फिल्में कहाँ बनती हैं? वो बनती हैं हैदराबाद में, because that's the land of language, Telugu. The most bizarre thing is कि हिंदी फिल्में कहाँ बनती हैं? महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहाँ की लैंग्वेज ही नहीं है. What I wanted to say कि सुशांत सिंह जैसे केसेस को रोकने का एक तरीका और भी है. I will come to the mental thing which you just said, कि हमें हमारी इंडस्ट्री सही जगह पे धीरे धीरे पहुंचानी होगी. Why someone like Sushant Singh should start from Patna just to make big in Hindi film industry and reach Mumbai and go through the struggle and whatever has happened to him and one day hang himself? Why not send the industry to him? Because organically film industry, Hindi film industry, UP, Bihar, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होनी चाहिए. हमारी सरकारों ने कभी वो हिम्मत नहीं दिखाई, हमारी सरकारों ने कभी वो प्यार नहीं दिखाया सिनेमा को एज ए मीडियम देखने के लिए. It is high time that our youngsters, our people, जो कि बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर सकते वहां से चल के मुंबई तक आना, उनकी जबान को उनका सिनेमा दिए जाने का टाइम आ गया है. Let us send the industry back to where it belongs. And especially Hindi film industry. Let's send the industry back to where it belongs. It shouldn't just be concentrated in Bollywood. Manoj Muntashir, thank you as always. We can always expect you to be honest and have constructive words to say on this very sensitive topic. Manoj Muntashir there, a person who was friends with Sushant Singh Rajput and a person who worked with him as well and who agreed to join us on this sensitive issue with a ruling party MP putting it out there in the ruling party's newspaper that Sushant Singh Rajput took his own life because of disappointment. Union Home Minister Amit Shah has taken a dig at Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia for saying that there will be 5.5 lakh Chinese virus cases in the national capital by the end of July, and dispelled such fears by saying that the situation in Delhi is stable. He also rejected the community spread claim of the Chinese virus in Delhi. Here's the full story. With over 80,000 coronavirus cases in the capital, the central and the state government are at loggerheads again. Along with the viral load, politics in the capital is also peaking. Taking on Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, Home Minister Amit Shah on Sunday countered the Aam Aadmi Party government's claim about the capital crossing 5.5 million cases by July end. The Home Minister said that Sisodia's statement was exaggerated and created unnecessary fear and panic. 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट किया कि 31/7 तक 5.5 लाख लोग हो जाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है. 31/7 को 5.5 लाख नहीं होंगे. हम अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि हमने कोरोना होने से पहले उसको रोकने के प्रयास पर जोर दिया है. After Shah's dig at the Delhi Deputy Chief Minister, the ruling Aam Aadmi Party reacted cautiously. केंद्र सरकार ने भी उसी श्रृंखला में दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की मदद करी. उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो हमने मांगी वो हमें मुहैया कराई, लेकिन काफी चीजें हमें मुहैया कराई. जो मदद हमने केंद्र से मांगी सब नहीं भी मिल पाई, तो जितना उनसे बन सका उन लोगों ने वो कोशिश की. The Union Home Minister also denied the community transmission claim made by the Delhi government. अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है. ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी
क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। Amit Shah took charge of Delhi's corona fight after an SOS from the Kejriwal government. With the COVID cases peaking, the centre and the state need to work together on war footing to contain the virus. Bureau Report, India Today. Well, amidst the Chinese virus pandemic, the Maharashtra government has continued to open up very slowly. Barber shops and salons are open from today. Clients are being allowed only with prior appointments, and a temperature check is mandatory during entry. Employees are, of course, in protective gear, while chairs and equipment are being sanitized after every single service. Here's a look at India Today's Tanushri Pandey scoping out a salon in Mumbai. It's a very special Sunday today, especially for Mumbaikars. Now, you must be wondering why. What was that one thing you really missed during the coronavirus lockdown? It was maybe taking a quick haircut in a barber shop or in a salon. So, starting from today, some of the beauty parlors and salons in one of the red zones, which is Mumbai, will be allowed to resume their services, but with only few selected services like waxing, threading and a haircut. We are right now outside Enrich Salon in Ghatkopar, and we are going to show you what kind of precautions will salon people will be taking to make sure that the customer gets complete precautions. So this is a completely contactless sanitizer instrument which has been put outside the salon here, and I'll show you how it works. So this is how you don't have to touch the instrument here, and we can sanitize our hands before we go inside. What kind of services will you be giving from today? We are giving haircut and hair color. Right. Haircut, Apart from that? Apart from that, we can do waxing. That's Right. all. That's Waxing and just threading, you told me. it. Threading of eyebrows. Eyebrows, just we the eyebrows. need not to like remove our mask. Remove our mask, right, sir. So the entire process, throughout the entire process, you will not allow any customer to remove their mask even for a second. No. Right. And all the hairstylists, I'm assuming, will be wearing the full protective gear. Yes, they are wearing face shield, mask, then gloves, then the shoe cover, covers, body cape. Also, something like that will be given to a customer as well. Yes, we are giving like disposable Right. bathrobe to them, hand gloves, mask, and the shoe cover. Right. Shoe cover we are giving. So how does it feel, sir? What is going to be different? How does it feel to open the salon after almost, I should say, 4 months maybe? After 3 months we are 3 months, opening, right. and like we are just adding few of the things. Initially, like we used to give a bathrobe to the client. Means before Corona also we used to take this precaution. Now just we have added few things like shoe cover we added, mask we added, and the gloves we added. Right. So So these are the we precautions will- which have been added. yeah. Also, is this the complete full strength of the salon? No, this Or- is the half strength only. We are operating in half strength. Okay. We have made two teams, like Team A and Team B. We have divided our team into two. Now, like to maintain social distancing, it is very necessary to like operate with the half strength only. Right. 2 days back, as we know that these salons have been allowed to open only on appointment basis. Services will be given on appointment basis, and all the appointments have been given already. So it's going full, is what the salon have told us. And listen now to excerpts from this exclusive interview with Union Health Minister Harshvardhan on the pandemic. लंबा तो मेरे को नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर कि बहुत लंबा चलेगा। एंडेमिक हो जाएगा जैसे दुनिया, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना, देखिए ये वायरस नया वायरस है, जड़ से तो समाप्त केवल 2 वायरसेस के खिलाफ दुनिया ने विजय प्राप्त की है, पोलियो और स्मॉल पॉक्स। तो बाकी वायरस तो बाकी जैसे बीमारियां बाकी सब समाज में रहती हैं, वैसे कोरोना वायरस की बीमारी भी रहेगी। जैसे बाकी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई होती है, अगर आने वाले समय में इसके खिलाफ और स्पेसिफिक दवाइयां आ जाएंगी या मान लीजिए और स्पेसिफिक वैक्सीन्स आ जाएंगी, तो जैसे बाकी बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स लगती हैं या बीमारी होने पे वो पर्टिकुलर दवाई दी जाती है, वैसे कोरोना वायरस के लिए भी दी जाएगी। अब इस कोरोना वायरस का जो स्प्रेड का मैकेनिज्म है, उसके कारण जो है लाइफस्टाइल में कुछ थोड़े से परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। जैसे अभी हम आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमने दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, हमने एक दूरी मेंटेन की हुई है, हमने अभी थोड़ा सा अपने आप को सैनिटाइज किया, मैं भी हाथ धो के आया और इसके बाद फिर दोबारा हो सकता है हाथ जाके धोऊंगा।
बार बार हम अपने नाक को, कान को, नाक को, आँख को या मुंह को हाथ नहीं लगाते हैं, तो ये थोड़ी सी लाइफस्टाइल का बेफजूल में कहीं भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे, छोटी गैदरिंग करेंगे, वहाँ भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो इतने ही परिवर्तन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम दुनिया में इस समय हर पैरामीटर पर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा है, इसलिए कोई हमें चिंता करने की बात नहीं है। अभी देखिए ना कि सिर्फ 2 लाख एक्टिव केसेस हैं, ये जून का महीना समाप्त हो रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कई विदेश से भी एक्सपर्ट्स आए, देश में भी कई एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्शन किया जून जुलाई के महीने के बारे में। इस समय के बारे में हमारे कई विदेशी मेहमान जो यहाँ पर आए, एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कई टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था भारत में 300 मिलियन केस होंगे इस समय पर, और उसमें भी 5-6 मिलियन केसेस की डेथ हो गई होगी। अब आप उसके मुकाबले देखिए कि सारे दुनिया के मुकाबले हमारे पास सबसे कम केसेस हैं, मिनिमम मोर्टेलिटी हो रही है, और हमारा रिकवरी रेट जो 58 और 59% के बीच में है। आज दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा, हमसे 1 या 2% ज़्यादा रशिया का जो रिकवरी रेट है। हर पैरामीटर पर हम दुनिया से बहुत बेहतर हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देशवासियों को कोई चिंता करने की जरूरत। देखिए, 2 स्तर पर काम हो रहा है। वैक्सीन की खोज के लिए सारी दुनिया काम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वो एक प्रकार से उन ट्रायल्स को मॉडरेट भी कर रहा है मिलके। भारत के अंदर भी इस समय अगर मैं टोटल गिनती करूं तो शायद 2-2.5 दर्जन जो है वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि 10-12 ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा एडवांस स्टेज में हैं। उसमें से भी आधा दर्जन के करीब ऐसे हैं जो अगले 2-3 महीने में क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में चले जाएंगे। दुनिया के अंदर भी कुछ थोड़े से हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर चले गए हैं, वरना तो सभी प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। वैक्सीन की खोज में सारी दुनिया लगी है, भारत भी लगा है, हमारे वैज्ञानिक भी लगे हैं, हमारा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ड्रग इंडस्ट्री के अंदर कई लोग हैं, हमारा ICMR है, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में देखिए वैक्सीन जो उसकी खोज होती है वो 1 या 2 दिन के अंदर या महीने, 2 महीने या 6 महीने में उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सफलता अच्छी क्वालिटी की मिलेगी तो अगले साल तक जो है कोई ना कोई वैक्सीन भी ज़रूर विकसित होनी चाहिए। भारत इसके प्रयासों में किसी दुनिया के देश से कम नहीं है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखिए, 2 बातें आप समझिए। अभी आपने कहा कि 5 लाख केसेस भारत में हुए हैं। पहला केस भारत में आया था 30 जनवरी को, और भारत की आबादी है 135 करोड़। इन 5 लाख केसेस में से भी 3,10,000 केसेस तो ठीक होके घर जा चुके हैं। जो बचे हुए एक्टिव 2 लाख केसेस हैं, इनमें से भी आप मान के चलिए कि ये 3% की हमारे यहाँ देश में मोर्टेलिटी हो रही है, दुनिया में सबसे कम। हमसे ज़्यादा अमेरिका की भी है, ब्राज़ील की भी है, हमसे ज़्यादा UK की भी है, सबकी है। पर 1 लाख जो केसेस हैं वो सबसे कम भारत के, पर 1 लाख मोर्टेलिटी सबसे कम हमारी। और ये केसेस जो ज़्यादा जो आपको दिखते हैं, ये इसलिए कि हम लोग एग्रेसिवली, हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हमने इतना ज़्यादा रैंप अप किया है कि जहाँ 5 महीने पहले, 4 महीने पहले एक लेबॉर्ट्री थी, आज वहाँ पर हमने 1036 लेबॉर्ट्रीज में टेस्टिंग हो रही है। Well, that's a wrap on this particular bulletin. For further news and updates, you can always log on to indiatoday.in. You can also download the India Today app. The news continues on the other side of this very short clip. Keep watching India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.